how are you all? I hope that you all are fine. My name is Virda Nirali from Saraswati Group of Education. And today in this session, we are going to learn a new poem, that is poem number 5, The Shower. But as we all know that before starting any poem or a chapter, what we are learning first? Yes, we are learning the vocabulary words of that chapter or a poem. And why we are learning that? Because it gives the exact meaning of the given word, and apart from that, it also improves our skills such as reading, listening, writing, speaking, right? All these skills are improved by learning vocabulary words. So for that reason, we are learning vocabulary. And our first vocabulary is shower. That means rain, barish. Then patter, P-A-T-T-E-R, patter, means a repeated light tapping sound. कि जो पानी की जो बूंद गिरती है तो वो साउंड आता है टप टप. So that is a repeated light tapping sound, that is patter, right? Tap tap tap. So that is patter. Then pen, P-A-N-E, pen, a single sheet of glass on a window or a door. कि एक ही ग्लास हो, ग्लास शीट हो, यानी कि जो विंडो होती है उसमें इसे पार्ट करके नहीं, पूरा का पूरा एक सिंगल ग्लास हो, राइट, डोर पे या फिर विंडो पे. सो दैट इज नोन एज पेन. देन क्लैटर, अ कंटिन्यूअस रैटलिंग साउंड, क्लैटर, रैटलिंग साउंड, राइट. देन halter, क्विकली एंड इन ऑल डायरेक्शंस, की जल्दी और सारे डायरेक्शंस पे. देन helter हमने सुना, H-E-L-T-E-R means quickly and in all directions. Now pelter, a rainstorm, कि बहुत ज्यादा बारिश होने, right? Now gush, float in a rapid and plentiful stream, कि पानी का एकदम बहाव पूरा का पूरा फोर्स से वो जा रहा है स्ट्रीम में, right? बहुत ही ज्यादा स्पीड में. So that is gush. Then roar, a loud deep sound, बहुत ही a loud voice, a sound, right? Whirl, move rapidly round and round, this is whirling, right? Eddy, E-D-D-Y, a circular movement of water, कि water जो गोल गोल जैसे circular movement उसकी जो होती है ना, so that is known as eddy. Now swirl, move in circular pattern. Circular means round, तो वही पैटर्न में मूव होना, so that is known as swirl. Gutters, channels at the side of the street to carry off rainwater, कि जो साइड में हमारे होती है ना, जो रेन वाटर सारा उसमें चला जाए, gutter, as you all know what is gutter, right? Then dashes, strikes forcefully against something, किसी भी चीज को जोर से हिट करना, that is known as dashes. So these all are our vocabulary words, and I hope you all understand it well. So before starting to our explanation part, let's have a quick recap of all the vocabulary words. Shower, rain, patter, a repeated light tapping sound, pen, a single sheet of glass on a window or a door, clatter, a continuous rattling sound, helter, quickly and in all directions, pelter, a rainstorm, gush, flow out in a rapid and plentiful stream, roar, a loud deep sound, whirl, move rapidly round and round, eddy, a circular movement of water, swirl, move in a circular pattern, gutters, channels at the side of the street to carry off rainwater, dashes, strikes forcefully against something, right? So these all are our vocabulary words. Now, first of all, let us have a brief introduction of the poem. So in this poem, the poet describes the rain. कि ये जो poem है, The Shower, उसमें जो poet है वो rain को describe करता है कि कैसा है rain. The sounds that it makes as it falls on the window pane. कि जब वो जब बारिश होती है तो वो बारिश जब विंडो पे उसका जो वाटर ड्रॉप्स है वो विंडो पे आके जब गिरते तो वो कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है. एज इट गशेस डाउन द स्ट्रीट एंड थ्रू द गटर्स, कि वो स्ट्रीट से होके स्ट्रीम में जाके गटर्स में, तो वो
कैसे होता है? द पोएट इज एंजॉइंग द रेन, लेकिन पोएट जो है वो रेन को एंजॉय करता है। इवन एज द सन बिगिंस टू पिक थ्रू द क्लाउड्स, कि अब बारिश धीरे स्लो हो गई है, धीमी हो गई है और सन भी क्लाउड से बाहर आ रहा है, लेकिन फिर भी द पोएट इज एंजॉइंग द रेन। हियर द रेन पैटर पैटर ऑन द पेन क्लैटर क्लैटर, कि जो बारिश की जो बूंदें हैं वो पैटर पैटर गिर रही है, और जब वो पेन पे आके यानी कि विंडो पेन पे जब वो टकराती है तो इट मेक्स अ साउंड क्लैटर क्लैटर। डाउन इट पोर्स हेल्टर पेल्टर, कि जब वो नीचे जाती है, पोर लाइक व्हेन इट टेक्स ऑल द वाटर डाउन, देन हेल्टर मींस वो सारे डायरेक्शन में फैल जाती है जल्द ही, एंड पेल्टर और रेन स्टॉर्म हो जाता है। क्विक इंडोर्स शेल्टर शेल्टर, कि सारे लोग अंदर अपने घर में रहते क्योंकि बाहर तो बहुत बारिश होती है। शेल्टर शेल्टर यानी कि घर। सी इट गश एंड रोर एंड बर्न, देखो ये बारिश की जो पानी जो है वो गश यानी कि वो रैपिडली वो प्लेंटीफुल स्ट्रीम में जा रहा है, वो वहां से बाहर निकल के आ रहा है। इट मेक्स अ लाउड साउंड एंड इट इज ऑल्सो व्हर्लिंग, राइट, इट फ्लोज ना, वेव्स जो आते हैं। स्विफ्टली रश एडी एंड स्वर्ल, कि स्विफ्टली बाहर एकदम आ जाता है, एंड अ सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर्स की जो स्टार्ट हो जाती है, इट स्टार्ट swirling through the street down the gutters, वो स्ट्रीट से गटर्स में होके पसर के सारा पानी वो वहां पे जा रहा है। How it splashes but we don't care, वो कैसे पानी गिरता है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Though it dashes everywhere, लेकिन वो सारी जगहों पर टकराता हुआ जाता है पानी। We don't care for peeping through, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन हम तो उसे देखेंगे ही। See up there a patch of blue, लेकिन ऊपर देखो there is a blue sky and the sun is in spite of rain, और देखो ब्लू स्काई है, बारिश हो रही है, लेकिन आपको पता है जब बारिश होती है तो वो हमारा स्काई जो पूरा ब्लैक हो जाता है और सन भी गायब हो जाता है, राइट। लेकिन वो क्या बोलते हैं कि ऊपर देखो सन भी है और पूरा का पूरा स्काई भी ब्लू है, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है। Has begun to smile again and the sun in spite of rain, कि सन भी अब इतनी बारिश होने के बाद भी वो स्माइल कर रहा है and everyone is enjoying the rain. So this is all about our poem. That here, let's again read out the poem. Here the rain patter patter on the pane, clatter clatter, down it pours helter pelter, quick indoors shelter shelter, see it gush and roar and whirl, swiftly rush eddy and swirl. Through the street, down the gutters, how it splashes, but we don't care though it dashes everywhere. We don't care for peeping through, see up there a patch of blue, and the sun in spite of rain has begun to smile again. So this is our poem. Now let's have a quick recap of the poem with the help of the video. The shower. The rain patter patter on the pane, clatter clatter, down it pours helter pelter, quick indoors shelter shelter, see it gush and roar and whirl, swiftly rush eddy and swirl. Through the street, down the gutters, how it splashes but we don't care, though it dashes everywhere. We don't care for peeping through, see up there a patch of blue, and the sun in spite of rain has begun to smile again. Okay, so I hope that you have seen the video and you have recalled the poem, right? So till now what we have learned? We have learned why it is important to learn vocabulary. Then we have seen the vocabulary words of this poem, and we have also understood the poem and too with the help of the video also, कि video भी हमने उस poem का देख लिया।
Now let us see our question answers. Let us understand the question answers. Right? So, our first question is write about how the first three lines of the poem describe the rain. कि पोम की जो फर्स्ट थ्री लाइन्स है वो रेन को कैसे डिस्क्राइब करती है. तो पहले तो हम देखते हैं कि फर्स्ट थ्री लाइन्स कौन सी है. हियर द रेन पैटर पैटर ऑन द पेन क्लैटर क्लैटर डाउन इट पोर्स हेल्टर पेल्टर. सो दीज आर द थ्री लाइन्स ऑफ द पोम. और वो हमें क्या डिस्क्राइब करती है. These three lines of the poem describe the rain as pouring against the window. कि वो विंडो से होके नीचे like it is going so fast that it is in a hurry, right? Then after, what does the rain do on the street? कि जो rain है वो street पर क्या करता है. What is the rain doing on the street? So the rain swiftly rushes in circular motion. कि वो स्पीड में एकदम सर्क्यूलर मोशन में that it goes through the street, right? Then after, what does the poet not care about? कि poet किसकी क्या केयर नहीं करता, उसे किसकी फिक्र नहीं है. So the poet does not care about the fact the rain water is splashing everywhere. कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बारिश की जो बूंदें वो हर जगह पर गिरती है, राइट. सो इस बात से पोएट को कोई फर्क नहीं पड़ता है. नाउ यू आर हैविंग द लाइन्स ऑफ द पोम. दैट इज हियर द रेन पैटर पैटर ऑन द पेन क्लैटर क्लैटर डाउन इट पोर्स हेल्टर पेल्टर क्विक इंडोर्स शेल्टर शेल्टर. So we are having these four lines. Now based on these four lines you will be given a question that what are the sounds the rain makes. कि जो rain है वो कौन कौन से sound like it produces. The sound the rain makes are patter patter and clatter clatter, right? Then after, how does the poet describe the rain pouring. कि ये rain जो pour हो रहा है तो उसे वो कैसे describe करता है. The poet described the rain pouring quickly and in all directions. कि वो सारी जगह पर फैल जाता है एकदम स्पीड में in all the directions, right? Then who is rushing for shelter? कि roof घर एक shelter के लिए कौन भाग रहा है. So everybody who is out in the rain is rushing for shelter. कि जो लोग बारिश में बाहर है, जो भीग रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं क्योंकि उसे घर एक शेल्टर एक रूफ के नीचे जाना है क्योंकि बारिश हो रही है, इसलिए शेल्टर यानी कि कोई घर, right? Now these are the things. Now the next stanza. We don't care for peeping through and see up there a patch of blue and the sun in spite of rain has begun to smile again. तो who is we here? तो यहाँ पे we don't care जो है, तो ये we जो है वो किसको इंडिकेट करता है. So here the word we refers to the people who are outdoors in the rain. यहाँ पे we जो है वो जो लोग बाहर है उससे इंडिकेट करता है, right? So the people who are outside in the rain, the we refers to that person. Okay? Then after, what is the patch of blue? Patch of blue means what? The patch of blue means the clear sky. एकदम clear जो sky हो गया है, that is known as patch of blue. Then what is happening in spite of rain? Rain तो हो रहा है पर उसकी जगह और क्या हो रहा है? So in spite of the rain, the sun has come out. कि rain तो है, अब sun भी बाहर निकल आया है, right? So these are all our question answers and I hope that you all understood it well. Now let's move on to our language part. So in our language session, what it is written, look at the words patter, clatter,
roar, and splash in the poem. Look at the words patter, clatter, roar, and splash in the bowl. They are words that imitate the sounds that describe. Now find out 5 other such sound words. Find out 5 other such sound words and add to the list. And you can also use a dictionary, and one is already given to you, that is click. So we are supposed to write the 4 words. So what you are supposed to do here, look at the words patter, clatter, roar and splash. क्या आप देख रहे हैं यहाँ ये जो words थे जो poem में use हुए हैं, right? So they are words that imitate the sounds they describe. तो ये जो words है वो sounds हम होते हैं उसकी जो आवाज आती है, right? तो वो ये sound words है. They imitate the sounds they describe. जो describe करते हैं वो ऐसा ही sound उसका हो. Now find out 5 other such sound words and add to the list. कि हमें ऐसे ही और भी 5 words लिखने हैं. And we are supposed to add to this list. हमें ये list में add भी कर देना है. और एक हमें already दिया गया है. That is click, 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 click. Right? तो हमें और 4 sound words लिखने हैं. तो one you can write. घड़ी की आवाज क्या होती है? When the second hand moves, what is the sound? It sounds as tick, tick, tick. So we can write tick. Right? We can also write tick. आप लोग कोई भी यहाँ पे अपने आप से कोई भी साउंड वर्ड्स लिख सकते हो. इट इज नॉट नेसेसरी कि मैंने जो वर्ड्स लिखवाए हैं वही वर्ड्स आपको लिखने हैं. यू आर सपोज टू राइट द सेम वर्ड्स. नो, इट इज नॉट सच. यू कैन राइट एनी ऑफ द वर्ड्स इफ यू वांट टू. ओके, लेकिन साउंड वर्ड्स. नाउ कोई भी चीज गिरती है, ऊपर से आप कोई भी चीज धड़ाम नीचे गिर जाती है, तो व्हाट इज द साउंड इट मेक्स? It makes the sound of smash. What sound it makes? It makes the sound smash. Right? Then if two metal things, दो metal की चीजें या फिर दो glass की चीजें जब टकराती है, then what does the sound it produce? It produces the sound clink. Which sound does it produce? It produces the sound clink. When two metal objects or glass objects, when you just hit, it makes the sound clink. Then after, which sound? The sound it makes, that is knock knock, knock knock knock. Right? So we can write that also. K-N-O-C-K, knock. Here we don't produce a knock, it is knock. Here the K is silent. So words which we have written over here, click was already given to you. Then after we have written tick, tick, tick,
knock. Now apart from these words, ये words के अलावा अगर आपको कोई words पता है जो sound words है तो आप वो words लिख सकते हो. There are many sound words, so you can write any of them. It is not such कि आपको यही words लिखने हैं. अगर आपको यही लिखने हैं तो भी आप लिख सकते हो. And if you want to write other such words, then also you can write. So this is all about our language part. Okay. Now let us again read the poem, so that before ending our session we should come to know about the poem and we don't forget that poem. So the shower. Here the rain patter patter, on the pen clatter clatter, down it pours, helter pelter, quick indoors, shelter shelter. See it gush and roar and whirl, swiftly rush, eddy and swirl. Through the street, down the gutters, how it splashes, but we don't care, though it dashes everywhere. We don't care for peeping through. See up there a patch of blue, and the sun inspired of rain has begun to smile again. So this is our poem, The Shower, and I hope you all understood it well. So what we have done in today's session, we have understood the meaning, why it is important to learn vocabulary, then we have understood the vocabulary words, and then we have understood the poem, and we have also seen the video of the poem, right? As a part of a recap, and after that we have seen the question answer and then language part. So this is all about today's session, and I hope you all understood it well. So I am going to send you the worksheet which you are supposed to solve it in your book. And while solving the worksheet, if you have any doubt, then first of all just go through the video कि पहले आप ये वीडियो को फिर से पूरा देखो, and still if you don't understand then you can ask me. Okay? So this is all about today's session. So now until we meet again in the next session, till then, bye everyone. Thank you and take good care of yourself.